अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू दी फायर एक्शन। माय नेम इज़ हसाम कुरैशी। आज आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी अरसे बाद वीडियो को क्यों लेकर आए हैं। तो आपको बताता चलूँ कि मेरे एग्ज़ाम थे, मैंने तैयारी करनी थी पेपर की, और इसलिए मैंने इतना बड़ा गैप दिया अपने इम्तहान की खातिर, क्योंकि वीडियो पर काम चलता रहेगा, पूरी ज़िंदगी चलता, बाल सफ़ेद हो जाएंगे तब भी काम चलता रहेगा यूट्यूब पर। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको कंटिन्यू ही रखना चाहिए। अगर उसको रास्ते पर छोड़ दो तो फिर वो चीज़ अधूरी रह जाती है। तो इसलिए मैंने स्टडी पर फोकस किया और इतना बड़ा गैप दिया यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के ऊपर इतना बड़ा गैप दिया मैंने, सॉरी, वक्फा दिया। मैंने वीडियो नहीं बनाई, रिएक्शन नहीं दिया। तो आज हम लेके आए हूँ रिएक्शन वीडियो, जो कि आपको सुनकर बहुत खुशी होगी किस पर रिएक्शन देंगे, लेकिन थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो आपको बता दूं कि बीटीएस पर आज हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो यूनाइटेड नेशन यूएनए में वो अपनी स्पीच करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। Thank you, Mr. बीटीएस Secretary आरम General, स्पीच एट द UNICEF यूनाइटेड Executive नेशन। Director, and all the excellencies and distinguished guests from across the world. वाओ, My name is Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS. It एग्जीक्यूटिव is an incredible डायरेक्टर honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. किम नामजोन। आया, Last November, इनका नाम किम नामजोन है। BTS launched the Love Myself campaign with UNICEF, building on our belief that true love first begins with loving myself. ये We've been मतलब कि partnering with UNICEF's End जवान Violence नस्ल के लिए, program मतलब उसको to कोई protect मैसेज वगैरह children देना and चाहते young हैं people जवान नस्ल all को, over the world from यूथ violence. को। And our fans have become a major part of this campaign with their action and with their enthusiasm. We truly have the best fans in the world. And I'd like to begin by talking about myself. जनूबी I was कोरिया, born in Ilsan, साउथ a कोरिया। city near Seoul, South Korea. It is a really beautiful place with a lake, hills, and even an annual flower festival. I spent a very happy childhood there, and I was just an ordinary boy. I used to look up at the night sky and wonder, and I used to dream the dreams of a boy. I used to imagine that I was a superhero who could save the world. And in an intro to one of our early albums, there's a line that माय गॉड, says, "My heart stopped when I was maybe 9 or 10." Looking back, I think that's when I began to worry about what other सही बात people है। thought of me. अपने I आप को started दूसरों की seeing नज़र myself से through their eyes. देखना चाहिए। I stopped looking up at the night skies, the stars. I stopped daydreaming. Instead, I just tried to jam myself into the malls that other people made. Soon, I began to shut out my own voice and started to listen to the voices of others. No one called out my name, and neither did I. My जिसको heart अगर stopped इंग्लिश नहीं and my समझ eyes आ रही तो वो closed नीचे shut. उर्दू में भी So, दिखा रहा like है, this, खासतौर पाकिस्तानियों के लिए I, जो बाहर बैठे हैं उनके we, लिए सब टाइटल उर्दू में भी all दिए lost गए our और names. इंग्लिश में भी We दिए became गए हैं like सब टाइटल ghosts. वगैरह। But I had one sanctuary, and that was music. There was a small voice inside of me that said, "Wake up, man, and listen to yourself." But it took me quite a long time to hear music calling my real name. Even after making the decision to join BTS, there were a lot of hurdles. Some people might not believe, but most people thought we were hopeless. And sometimes I just wanted to quit. But I think I was very lucky that I didn't give it all up. And I'm sure that I and we will keep stumbling and falling like this. BTS has become artists performing in those huge stadiums and selling millions of albums right now, but I am still an ordinary 24-year-old guy. If there's anything that I've achieved, it was only बाकी possible मेंबर भी आए हैं that बीटीएस I के have my साथ, other BTS पीछे वो खड़े हैं, members right by my side, कुल मिलाकर and सात because of the सात love लोग हैं। and the support that our ARMY fans all over the world made for us. And maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me.
Today, I am who मैं I वो हूँ जो am मैं हूँ। with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and that'd be me too. These faults and mistakes are what अच्छी I बातें am, कर रहे हैं ये भी। making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. I like to say the one last thing. After releasing our Love Yourself albums and launching the Love Myself campaign, we started to hear remarkable stories from our fans all over the world, how our message helped them overcome their hardships in life and start loving themselves. Those stories constantly remind us of our responsibility. So let's take all one more step. We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself. I like to ask all of you, what is your name? What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Find your name and find your voice by speaking yourself. किम नामजूम। I'm Kim Namjoon and also RM of BTS. I'm an idol and I'm an artist from a small town in Korea. Like most गलतियाँ हर people, किसी से होती है, I've इंसान made many गलतियों खता tiny का mistakes पुतला in है। my life. I have many faults and I have many more fears, but I'm gonna embrace myself as hard as I can. And I'm starting to love myself gradually, just little by little. What is your name? Speak yourself. अच्छी बातें की है इन्होंने। वीडियो ख़त्म हुई। वीडियो अख्ताम को पहुंच गई। अच्छा तो कैसे लगी इनकी स्पीच आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इन्होंने अच्छी बातें की हैं या अच्छी नहीं की, अपनी राय के मुताबिक। मुझे तो इनकी बातें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने जवान नस्ल को मैसेज दिया, यंग यूथ को मैसेज किया कि अपने आप की सुनो, किसी की ना सुनो, किसी की बातों में ना हो। जिस चीज़ के लिए आपका दिल धड़कता है, जो काम आप करना चाहते हैं, जो आपको अच्छी लगती है फील्ड, जिस फील्ड में आपको काम आता हो, एक्सपीरियंस हो, जो चीज़ अच्छी भी लगती, जिसमें आप आराम से वो काम कर भी सको, दिल से काम कर सको, जिसमें आपको सुकून मिले, आप वो काम करो। किसी की बातों में ना हो। आप देखो आपका नाम क्या, आप जो हो वो हो आप ही, ये बात है। वो सब मानते भी हैं, जो हो वो हो, लेकिन किसी की बातों पर नहीं आना। सब एक दूसरे के साथ खुशी से रहो, हंसो खेलो। ये इनका असल में एक मैसेज था यंग यूथ के लिए। आप जो करना चाहते हो आप करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं। आप किसी की बातों पर ना हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप जिस काम के लिए आप ठान लो कि आप वो करेंगे करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये अच्छे काम की बात करूँ मैं, अच्छा काम करना चाहोगे जो भी, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। असल में इनका ये मैसेज था। तो इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की, इन्होंने अपनी सारी स्टोरी सुनाई। बचपन में 10 साल से वो क्या अपने आप के बारे में सोचना नहीं सोचना शुरू कर दिया। बाकी इन्होंने भी बोला कि गलतियाँ होती है, गलतियाँ मेरे से भी हुई। और ये बात बता चलो, इंसान खता का पुतला है, गलतियाँ इंसान से होती हैं। इंसान से नहीं होगी तो और किससे होंगी गलतियाँ? तो गलतियाँ होती रहती है और असल बात यह है कि गलतियों को दुरुस्त किया जाए और अच्छा पैगाम पहुंचाना भी ये बहुत बड़ी नेकी है। अच्छी बात फैलानी चाहिए और लोगों को अच्छी नसीहतें करनी चाहिए जिससे लोगों का फ़ायदा हो। तो साथ में इनके बहुत मशहूर है, ये जनूबी कोरिया के, साउथ कोरिया में
में पैदाइश हुई इनकी, और वहाँ के ये इनकी BTS की टीम है जिसको मैंने वीडियोस काफ़ी देखी, उनका मैं फ़ैन भी हूँ। इनमें जिन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जिन जो है। तो आप भी अपनी राय दें नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करें उसका आप नीचे सजेस्ट करें, कमेंट में बताएं, हमें उसका लिंक भी साथ सेंड करें। और अगर आप चाहते हैं कि BTS की मज़ीद वीडियो पर मैं व्लॉग्स पर मैं रिएक्शन दूँ तो आप नीचे कमेंट में उसका लिंक सेंड कर दें, तो इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो पर रिएक्शन दे दिया जाएगा। तो चलते हैं, खुदा हाफिज़।